is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. This is my desire to honor you. With all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I will live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your Malachi 3:10 says, मलाकी 3:10 कहा गया bring है, your tithes into the storehouse, अपने दान दशमांश जो परमेश्वर के भवन में लेकर आइए, so that there may be meat in my house. ताकि मेरे भवन में भोजन रहे। Now, literally it meant that in those days, सच बात बताया जाए तो सच में उन दिनों में ऐसा ही था। that there will be meat in the house. परमेश्वर के भवन में खाना हो, Now, that is so important. ये बहुत जरूरी है। देखिए, So I will say, in these days, in general terms, I will say, when we give our first and the best as tithe, it provides for the work of God. देखिए आज के दिन में मैं बताऊं तो क्या होगा, अगर तो हम अपना पहला और उत्तम भाग परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर के काम के लिए वो सहायता मंद बनकर रहेगा। Isn't that right? है कि नहीं? That's what happens. वही हो रहा है। So by giving, you make sure there is meat. That means in the modern language, you make sure that the work of God is sustained. देखिए जब आप देते हो तो परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु अर्थात परमेश्वर के काम के लिए तुम देते हो, मांगे पूरी होती हैं। So I would say the first way to honor God with your substance is to give towards the work of God, provide for the work of परमेश्वर की God. प्रतिष्ठा करने का सबसे पहला भाग यह है कि तुम परमेश्वर को जो है देते हो, परमेश्वर काम By के your देते हो tithe. दशमांश के द्वारा। The second way, दूसरा रास्ता, are you there with me? क्या आप हो मेरे साथ? The second way. दूसरा रास्ता, Now, the second way is going to be really fantastic, very important. दूसरा रास्ता बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अद्भुत A होगा। lot of times the first way is very emphasized. बहुत सारे समय जो है पहला भाग बहुत जोर लगाकर बोलते हैं।
And the second way is not very emphasized. दूसरा very रास्ता much जो emphasized. बहुत ज्यादा नहीं बात So the किया जाता, first way to honor God is that तो परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने का पहला रास्ता यही है। through by giving our tithes we help the work of अपने God दशमांश को जो है देकर परमेश्वर के काम के लिए हम सहायता करते and हैं, we provide for the work of God. परमेश्वर के काम के लिए हम देते हैं। Secondly, दूसरी बात, we must provide for our elders, both natural elders and spiritual elders. हमारे बुजुर्गों के लिए, हमसे जो बड़े हैं प्राकृतिक रूप से और आत्मिक रूप से, उनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। I'm talking about parents and so on. कि हमारे माता पिता, Let's deal with the natural side. पहले प्राकृतिक माता पिता के बारे में हम देखते हैं। Oh, this is so important. In our culture, we need to realize that very, very, very much. हमारी संस्कृति में इसको बहुत जानना जरूरी है, महसूस करना जरूरी है। Unless and until we honor God, see, when we give to our parents, for example, and we help our parents and take care of them, that honors God. That is one of the definite ways to honor God with our substance. देखिए, जब हम अपने माता पिता की प्रतिष्ठा करते हैं, उन्हें आदर करते हैं, उन्हें जब देते हैं, तो वह एक रास्ता है हमारे परमेश्वर को आदर करने का। Not only natural parents, but also spiritual parents. सिर्फ प्राकृतिक माता पिता ही नहीं, बल्कि आत्मिक माता पिता को भी। You want to really increase? क्या सचमुच आप वृद्धि चाहते हो? I am giving you foolproof way to increase. अपने वृद्धि का पूरा प्रूफ, फुल प्रूफ मैं आपको देने You के लिए तैयार can't हूं। make a mistake doing this. आप इसे करने में You चूक do ही नहीं this, सकते। you will increase. आप इसे करो तो वृद्धि This पाओगे। is one of the things that will set you on a level that's much higher than anything else. ये एक ऐसी बात है जो तुम्हें उच्च श्रेणियों But तक this मिल is not जाएगी, much emphasized these पर days. इसके बारे में ज्यादा आजकल बात नहीं किया जाता, Because preachers are interested that people give for the ministry. क्योंकि प्रचारक जो है सिर्फ इस बात पे तुले हुए हैं कि सेवकाई के लिए वो तो काफी है। I can understand their preoccupation with that. मैं उनकी बातों को अच्छी तरह समझ पाता हूँ क्यों ऐसा करते हैं, That's all right. वो बिल्कुल ठीक But बात we तो need to है, emphasize this also. पर इसे भी हमें ध्यान करना Because this चाहिए, will solve a lot of problems in the home and this will set people on the way to victory क्योंकि financially. यह जो है लोगों को बिल्कुल छुटकारा करेगी, उनके आर्थिक स्थितियों में वृद्धि पाने के लिए एक रास्ता बनाकर देगी, छुटकारा पाकर आसानी Turn से with me रहेंगे। to Deuteronomy chapter मेरे 5. साथ मोड़ लीजिए व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय। The way to honor God is to provide for your parents and natural elders. तुम्हारी मांगों को पूरा करने के लिए जो है तुम्हें जो अपने माता पिताओं को और आत्मिक माता पिता को Okay. देना जरूरी है। Deuteronomy chapter 5 verse 16. व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 16वां वचन। Honor thy father and thy mother as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged, that it may go well with thee in the land which the Lord thy God giveth thee. अपने पिता और माता का आदर करना जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दिया उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा As you भला हो। know, this is part of the 10 commandments. देखिए, ये 10 आज्ञाओं का एक भाग है, But this is one of those commandments that's quite long and it comes with a blessing attached to it. पर यही जो है एक आज्ञा बहुत बड़ा है जिसके साथ आशीष भी मिलाया Didn't गया say है। just honor your father and mother. फिर यही नहीं कहा है कि अपने माता पिता का आदर करना, It says if you honor your father and mother, then the days may be prolonged. Your days may be prolonged. कि अगर अपने माता पिता का आदर करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी And it will go well with you. और तुम्हारा भला होगा। How many of you want it to go well with you? कितने लोग चाहते हो कि सब कुछ आपके लिए भला हो? If you want it to go well with you and you want your days to be prolonged, the Bible says honor your father and mother. अगर आपके लिए सब कुछ भला हो और आप चाहते हो कि सब कुछ जो है भला चलता रहे, तुम्हारी लंबी आयु हो, तो कहा गया अपने माता Turn पिता का आदर with करो। Mark's Gospel chapter 7. मेरे साथ मोड़ लीजिए मरकुस 7वां अध्याय। In the New Testament, we read Jesus talking about these things. नए नियम में जो है यीशु मसीह इसके बारे में बात करते हुए हम देख पाते Chapter 7 verse 10. हैं। 7वां अध्याय 10वां वचन। Some people are thinking, what brother? I thought you're talking about how we can get more money. कुछ लोग सोचते हैं कि कैसे ब्रदर हम कैसे पैसे पा सकते हैं, उसके बारे में बात करोगे। That's what I'm talking about. वही मैं बात कर रहा हूँ, That's exactly what I'm talking about. सही रूप से उसी के बारे में बात कर रहा How हूँ, to get more. कैसे और ज्यादा पाएं। I wish there was a shortcut. There is nothing. एक शॉर्टकट होता तो अच्छा होता, पर ऐसा कुछ नहीं This है। is the godly way. यही जो है परमेश्वर का रास्ता है। This way your days will be long in the earth and it will go well with you forever. पर इस रीति से करोगे तो आपकी लंबी आयु होगी, सब कुछ तुम्हारे लिए भला होगा। So listen very carefully. तो बहुत ध्यान से सुनिए। Chapter 7 verse 10. 7वां अध्याय 10वां वचन। For Moses said, honor thy father and mother, and whoso curseth father or mother, let him die the death. क्योंकि मूसा ने कहा है अपने पिता और माता का आदर कर, और जो कोई माता पिता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। See, it says,
Moses said, honor your father and mother. कहा गया है, मूसा ने कहा है अपने माता पिता का आदर He करो, that curseth the father and mother, let him die. it और says. जो अपने माता पिता को श्राप देता है वो मार डाला जाए। Now, we talked much about blessing and cursing. आशीष और श्राप के बारे में बहुत कुछ बात किया है, And we talked also about how blessing is saying something about good about somebody and cursing is saying something bad about देखिए somebody. किसी और के बारे में बुरा कहने से और किसी को श्राप देने से क्या होता है उसको भी हमने यहाँ देखा है। Now the disciples said, Jesus, the tree that you cursed is withered away. चेलों ने यीशु से कहा है कि जिस पेड़ को तूने श्राप दिया वो जड़ से सूख गया है। How did he curse? कैसे उसने श्राप दिया? He didn't say, use some extraordinary words. He just said, let no man eat fruit of you hereafter. That's curse. उसने कोई असाधारण सी बात नहीं कि, साधारण रूप से कहा कि अब से कोई तुझसे कोई फल न खाने पाए, You'll be fruitless तू बिना फल के होगा and nothing will come out of you. और तुझसे कुछ भला नहीं आएगा। That's the curse. वही श्राप है। So blessing and cursing oftentimes is in the word. आशीष और श्राप दोनों जो है वचनों में ही है। But let me remind you of another thing also. पर एक और बात भी मैं आपको याद दिला It is not just in words, it is also in deeds you curse. सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि क्रियाओं में भी यह है। That's the thing that we don't often see. वही जो हम अक्सर देख नहीं पाते हैं। You do by what you do to your parents. You are either blessing them or cursing them. अपने माता पिता के साथ जो तुम करते हो वही तुम्हारे लेके जाएगा। तुम आशीष दो या श्राप दो। When you do something good for them, you're blessing जब them. आप उनके लिए कुछ भला करते हो तो आप उन्हें When you आशीष दे give रहे हो। them, when you take care of them, when you attend to them, when you give them everything that they need and make sure that they're able to live in their old age comfortably. आप जब उनकी अच्छी तरह देखभाल करते हो, उनके बुजुर्ग के दिनों में जो है अच्छी तरह देखभाल करते हो, सब कुछ सुविधा बना कर देते हो, When you give them preference over yourself, जब अच्छा प्रेफरेंस उन्हें देते हो, when you do that, जब ऐसा कुछ करते you हो, are literally blessing them. आप उन्हें आशीष दे रहे हो। Now suppose say I'm giving 1,000 rupees to someone. अगर कोई कहे कि मैं किसी को 1000 रुपए दे रहा I'll हूँ, sometimes say, let me bless you. मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, That's why I'm giving इसलिए you. मैं आपको दे रहा हूँ। Right? ठीक है, By giving the 1,000 rupees, I'm blessing that person. 1000 रुपए देने के कारण जो है मैं उन्हें आशीष दे रहा हूँ। By giving to your father and mother and meeting their needs and providing for them, you are अपने blessing माता them. पिता को तुम देते वक्त उन्हें उन्हीं सुविधाओं को पूरा करते वक्त जो है By आप उन्हें आशीष दे रहे neglecting हो। them, by not giving to them, by being selfish and living for your own, you are cursing them. उनको न देकर अपने खुद के लिए जीते वक्त जो है तुम उन्हें श्राप दे रहे हो। Now, a lot of people will say, I say this because a lot of people will say, no, I never cursed my father and mother. बहुत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप को श्राप नहीं But they देता, never gave one penny also. एक फुटी कौड़ी भी नहीं देते उन्हें। That's what is cursing. वही जो श्राप है। You see, you may have never opened your mouth and said anything, आपने अपना मुंह खोलकर शायद उनसे बात नहीं किया but you होगा, have not done anything good. The responsibility is there when you have not done anything. That is like cursing पर them. कुछ भला उनके लिए आपने किया नहीं है, जब उनके लिए कोई जवाब नहीं देते हो, उनकी ओर When देखते God हो, has श्राप blessed के you बराबर so है। much, when you have so much and you don't attend to them and give them anything, that is a जब curse. परमेश्वर तुम्हें बहुत कुछ दिया है, तुम बहुत कुछ अनुभव करते हो, तुम उनको नहीं देते हो तो वो श्राप के बराबर है। In many families there are strife. There is strife going on between husband and wife because the wife says, I don't want your parents बहुत here. सारे परिवार में जो है झगड़े हो रहे हैं, कहते हैं कि मैं नहीं चाहती, पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे माता Or पिता the को नहीं husband चाहता, says, I don't want your parents और here. पति कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता यहाँ ना आए, We don't want them here. हम नहीं चाहते कि वे यहाँ I आए, won't give anything to them. मैं उन्हें कुछ नहीं दूंगा। Honor your father and mother. He said he hooked up prosperity with this. He says if you honor your father and mother, your days will be long. Everything will work out good for you. उसने समृद्धि को जो इसके साथ हुकअप कर दिया है, कहा है कि अपने माता पिता का आदर करोगे तो तुम्हारी लंबी आयु More होगी। than being a prosperity preacher, I'm a Bible preacher. समृद्धि का प्रचारक होने के बजाय मैं बाइबल का प्रचारक होना चाहता हूँ। So I won't preach the prosperity that you like to hear. तो जो आप सुनना चाहते हो वह समृद्धि में प्रचार I नहीं preach करता। only prosperity from the Bible. मैं समृद्धि बाइबल से प्रचार करता हूँ। There is no other prosperity as far as I am concerned. जितना मैं जानता हूँ इसके अलावा कोई और समृद्धि There नहीं is है। only one prosperity that's good for us. सिर्फ एक ही समृद्धि है जो हमारे भले के That लिए is है। this Bible तो prosperity. ये बाइबल की समृद्धि It है। is the prosperity that comes in the right way. ये एक ऐसी समृद्धि जो सही रास्ते से आती है। And I tell you, we must consider our ways. And this is real, my friend. This is the way to do it. और मैं कहता हूँ हमारे चाल चलन को ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सच्चा रास्ता है। So, when you did not do something good and you actually
neglected them, did not give them food, did not give them clothes, did not make sure they were taken care of, then you are cursing them literally and let that man die, it says. तो जब अपने माँ बाप को तुम आदर नहीं करते हो, उनको जो चाहिए वो नहीं दे सकते हो, बाइबल कहता है कि वो आदमी बिल्कुल मार डाला जाए। If the man doesn't do it, let him die. अगर वो अपने माता पिता को आदर नहीं करता, उसे मार डाला जाए। What happens if he takes care? अगर वो अपने माँ बाप की देखभाल करे तो His क्या होता है? days will be long on this earth. इस भूमि में उसकी आयु बहुत If लंबी you होगी। take care of your parents, you live. If you don't take care, you die, it says. अगर अपने माँ बाप की देखभाल करोगे तो बहुत लंबी आयु जियोगे, और नहीं देखभाल करोगे तो बहुत जल्दी मार डाले जाओगे। We must decide to live. तो हमें निर्णय कर लेना चाहिए कि हम जिए, Right? ठीक है? We can choose between death and life. जीवन और मृत्यु के बारे में हम चुन सकते हैं। And I know we all choose life. जानते हैं कि हम सब जीवन को चुनेंगे। Amen? आमीन। Life. जीवन, But death and life are symbolic terms also. पर जीवन और मृत्यु जो है एक सिंबॉलिक शब्द भी है। You see, when it says death and life are in the power of the tongue, जब कहा गया कि जीवन और मृत्यु हमारे जीभ के सामर्थ्य you know में what है, it means? मालूम है उसका अर्थ क्या है? It means every good thing and every bad thing is in the power of the tongue. Anything good happening to you, anything bad happening to you comes through the power of the tongue. हर एक भला और बुरा जो कुछ भी हो, वह जो है हमारे जीभ के सामर्थ्य से बाहर निकल कर आता है। Why do I say it like क्यों मैं that? ऐसा कहता हूँ? Because death does not mean that you just fall down and your breath leaves you and you're dead. You क्योंकि know? मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे ही गिर जाओ और अपने जीवन को छोड़ दो। Not only that is death, सिर्फ वही मृत्यु नहीं है, that is the ultimate. वह तो आखिर बात है। But death is where the blessing leaves and there is nothing good left. पर मृत्यु का मतलब यह है कि जहां आशीष तुम्हारे हाथ से छूट जाती है और कुछ नहीं रहता तुम्हारे हाथ में। Bereft of blessings. आशीष पूरी तरह से चूक जाना। Death is the symbol of all that is evil and bad and negative. मृत्यु जो है सभी प्रकार की बुरी चीजों का एक चिन्ह है। That word death represents everything evil, everything negative, everything that is bad. मृत्यु जो है हर एक बुरी हालतों का एक चिन्ह बनकर रह गया है। Life is also a symbolic word. जीवन भी एक सिंबॉलिक शब्द है। It represents all that is good, all that is positive, all that जीवन is का best. मतलब है सभी प्रकार की मुमकिन बातें, सभी प्रकार की आशीषें, सभी प्रकार की Are you सकारात्मक there? बातें। क्या आप हो? So anything good or bad, चाहे जो कुछ भला हो या बुरा हो, positive, negative things in life, all happen, it says, by the power of the tongue. सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, जो कुछ भी हो, सब जो है तुम्हारे जीभ के सामर्थ्य के द्वारा हो रहा है। So when it says, if you honor your mother and father, you live long. तो जब तुम कहते हो कि अपने माँ बाप का आदर करो तो तुम्हारी आयु लंबी होती Sure, है। the immediate reference is to long life itself, but not only long life, but good life also. Everything that is good. निश्चय रूप से जो है लंबी आयु का मतलब बहुत ही अच्छा और भला। Living long is just one thing, but living good is also लंबी there. आयु का मतलब एक और बात है, भले रूप से, अच्छे रूप से, उत्तम जिंदगी जीना When एक it और बात says है। if you curse your father and mother, you die, that means everything bad. You may not fall down and die today, but everything bad and negative comes and latches itself on. पर जब तुम कहते हो कि जब तुम अपने माँ बाप को श्राप देते हो तो तुम मृत्यु को पाओगे, तो सभी बुरी चीजें जो वहीं से हट जाती हैं, सारी आशाएं तुम्हारे हाथ से छूट See, this जाती is हैं। serious business. God's word tells us देखिए that. बाइबल का वचन जब कहता है तो कितनी सीरियस भरी बात है ये। Do we want to live क्या good? तुम अच्छा जीना चाहते Of हो? course. हाँ, निश्चय रूप से We want to live good. हम अच्छा जीना We चाहते want हैं। everything to go well with us. हम क्या आप चाहते हो कि सब कुछ भला तुम्हारे लिए हो? Yes. हाँ, निश्चय रूप से। But one Bible condition is that you honor your father and mother. पर बाइबल का एक कंडीशन यह है कि तुम अपने माँ बाप का Now, how आदर do you करो। honor your father and mother? कैसे अपने माता पिता का तुम आदर करोगे? We are talking about honoring with the अपनी substance. संपत्ति से आदर करने के बारे में बात कर रहे थे। Hello, Hello. substance. संपत्ति। Everybody understands this. सभी इसे समझते हैं। Substance. संपत्ति। Not honor. One man said, brother, I always honor my father and mother. When they come in, I get up. एक आदमी ने कहा है कि मैं हर वक्त अपने माँ बाप का आदर करता हूँ, जब वो आते हैं तो मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। If you just get up, it's big respect and honor. जब वो आगे तो खड़े हो गए तो बहुत बड़ा आदर हो गया क्या? Or if you just wish them, it's a great respect. या फिर उन्हें तुम बधाई देते हो तो वो The आदर हो गया। Bible doesn't say that is respect. बाइबल कभी नहीं कहता कि वह आदर है। The Bible says only when you give, it is honor. बाइबल कहता है जब तुम दोगे वही आदर है। Even with God, you can't just salute God every morning. Say, good morning, Lord. You know. परमेश्वर के साथ भी जो अगर तुम सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बोले तो वो He is बात not नहीं a है। local government official.
pleased with your salams. वह कोई लोकल गवर्नमेंट अफसर नहीं है जो तुम्हारे सलाम को चाहता है। नहीं नहीं, There you put your salams every day. They are impressed. वहां पर तुम सलाम दो तो वे उससे इंप्रेस But होते हैं, God is not impressed पर with it. परमेश्वर इससे इंप्रेस नहीं होता। He says, I don't want your salams, bring your substance. वो कहता है कि मुझे तुम्हारे सलाम की जरूरत नहीं है, तुम्हारी संपत्ति लेकर आओ। Hello. लो, God knows where the honor really comes from. परमेश्वर जानता है कि सच्चा आदर कहां से आता है। God is substantive. He deals substantially. परमेश्वर जो है संपत्ति के आधार पर जो तुम्हें सजाता Because है, He knows that the substance is the thing that matters to क्योंकि you. वो जानता है कि तुम्हारे लिए संपत्ति बड़ी चीज है। And He wants that which matters to you most to come to जो Him. तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है उसे वह तुमसे चाहता है। So you can't fool God. You can't say, I honor God, I pray half an hour and I read the Bible and I never cursed the word, I never said anything bad about God and all. Did you give? Then you honored. Otherwise you don't तुम honor. परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। तुम नहीं कह सकती मैंने बाइबल पढ़ा है, प्रार्थना किया, इतना उपवास किया, इतना ये किया, वो किया है। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे पास जो संपत्ति है उसे लेकर उसे आदर करो। Did you honor Him with the substance? If you didn't, you didn't honor. क्या That's it. तुमने संपत्ति से उसका आदर किया तब ठीक है, नहीं किया तो वो गलत बात This है। is not me preaching. This is the Bible. ये मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, I am बाइबल a प्रचार कर रहा Bible है। preacher. मैं बाइबल का प्रचारक हूँ। Telling what the Bible says. बाइबल जो कहता है उसे मैं कह रहा So हूँ। honoring father and mother also is not just this salam and this false, thing about idea of what respect is, just acting very humble before them. No. माता पिता का आदर करने का मतलब ये नहीं कि जब वो आए तो उनके सामने बिल्कुल नम्र होकर उन्हें आदर करना, उन्हें नमस्कार करना, ये बात नहीं है आदर। I say this because, I was dealing with one case and where the woman said, I don't want his parents over here. मैं एक डील केस कर रहा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस स्त्री ने कहा कि मैं उनके माता पिता को नहीं चाहती। Yeah, sure, I will respect them, honor them. निश्चय रूप से मैं उनका आदर करूंगी। When they come, I'll say, good morning, please come. जब वो आएंगे तो मैं उन्हें गुड मॉर्निंग कहूंगी, कृपया But अंदर आइए। no, we don't want to give 1,000 rupees a month to पर them. नहीं, हम 1000 रुपए उन्हें नहीं देना चाहते। No. नहीं, And that is not honor. वो आदर नहीं है। Who needs your good morning? किसे चाहिए तुम्हारा गुड मॉर्निंग? They need money. उन्हें पैसों की जरूरत They है, need food. उन्हें खाने की They need जरूरत a है, place to stay. उन्हें अच्छा जगह They चाहिए need रहने, clothes. उन्हें कपड़े So चाहिए। don't give your good mornings. How much can you give? तो अपना गुड मॉर्निंग मत दीजिए, कितना आप दे सकते हो उन्हें? Oh, we ourselves don't have enough. हमारे खुद के पास नहीं है, But you have something. और तुम्हारे पास कुछ तो है। Out of that something, give them whatever. उस थोड़े से थोड़ा उन्हें दो, According to your ability. तुम्हारी क्षमता के अनुसार। Because your ability will increase when you give to your parents. God will increase your ability to give more. क्योंकि जब तुम दोगे तो तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी, परमेश्वर सहायता करेगा, तुम ज्यादा पाओ। You can expect God to increase you just because you want to take care of your parents the best way. जब तुम अपने माता पिता को उत्तम रीति से देखभाल करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी क्षमता को That's बढ़ाकर, the secret, you see. ये सीक्रेट है। देखिए, When you desire in your heart and say, I want to do the best for my parents and take care of the best, whatever it costs, whatever it involves, I will do the best. God will prosper you just for that. देखिए, जब तुम कहोगे कि मैं अपने माता पिता को अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, सबसे श्रेष्ठ उन्हें दूंगा, उत्तम से उत्तम पदार्थ दूंगा, तो परमेश्वर तुम्हें उत्तम से उत्तम आशीष A देगा। lot of people don't know these principles. बहुत सारे लोग इन सिद्धांतों को नहीं जानते हैं। They want prosperity and they want increase, they want more better job and they want this and that, but they don't want this वे preaching. समृद्धि चाहते हैं, वे इधर से उधर नौकरी चाहते हैं, अच्छा उत्तम नौकरी चाहते हैं, पर वे अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहते। I'm simply preaching the Bible. मैं बाइबल प्रचार कर रहा हूँ आज। Amen. आमीन। He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. Where there once was only hurt, he gave his healing hand. Where there once was only pain, he brought comfort like a friend. I feel the sweetness of his love piercing my darkness. I feel the bright and morning sun as it ushers in his joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing.
Oh, do you feel it? I feel the sweetness of His love piercing my darkness. I feel the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Your anger lasts for a moment in time, but your favor is here and will be on me for all my lifetime. You turn my